My IG DMs. You guys flooded my IG DMs so much on this topic कि please make a female green flag tier list. Please मेरे को बताओ the type of woman I should marry. किस औरत को, किस टाइप की औरत को मुझे अपने बच्चों की माँ बनाना चाहिए. मेरे DMs इस चीज से भर चुके थे. And I was like, you know what? That's the first thing I'm gonna do in the morning. It's 6 a.m. सुबह के 6 बज रहे हैं. And I was like, you know what? I'm gonna make a video on this topic. So boys, we are back onto another banger. Okay, so please pay attention to that. Okay, so यहाँ पे बेसिकली आप एक टेबल देख सकते होगे. इट्स फीमेल ग्रीन फ्लैग टायर लिस्ट. अगर आपका गोल शादी करना है आने वाले सालों में या फिर कभी भी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आइडियल वीडियो फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ उन औरतों की बात करने वाला हूँ हु इज लाइक वर्दी ऑफ गेटिंग मैरिड टू यू, हु कैन एक्चुअली फॉर्म यू नो दैट फेथफुल रिलेशनशिप यू वांट, दैट रिलेशनशिप जहाँ पे यू नो समथिंग बेसिकली व्हाट योर मॉम एंड डैड हैड टाइप शिट. समझ रहे हो आप? बेसिकली दैट. ओके, सो इट्स टेबल बना रखा है मैंने वेयर इट इज लाइक अनरियल डिवाइन देवी बीइंग द फर्स्ट ब्लॉक. इसमें क्या है कि अगर ये गुण है इस ब्लॉक में तो मतलब अगर इस गुण की औरत है ना कोई, तो शादी कर लो उससे शादी टाइप शिट. ठीक है. देन देयर इज लाइक फिक्शनल वुमेन, देन देयर इज ग्रीन फ्लैग टॉप 1%, लाइट ग्रीन, ये बेयर मिनिमम है दोनों. ये लास्ट के बॉटम के दोनों ब्लॉक्स बेयर मिनिमम. ओके, सो अगेन इफ यू आर अ वुमन वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज यू कैन क्लिक ऑफ राइट नाउ बिकॉज आई डोंट रीड पैराग्राफ्स एट ऑल, बिलीव मी, एंड इट्स गोना बी वेरी ऑफेंसिव टू फीमेल्स ऑफ आवर जनरेशन बिकॉज ऑब्वियसली बात है. आई मीन क्या ही बोलूं उस चीज को तो मैं. बट इफ यू आर अ मैन वाचिंग दिस एंड if you want to have an ideal wife, believe me, it's going to be a blessing to you. It's a very good video for you. And for me, someone who's like always making video to make a man's life better, I'm not going to be lying to you because I'm afraid of 3 women who's going to be commenting bad for me, good for me, more engagement. I like that shit. Okay, anyways, so without any further delay, boys, let's get started. Okay, so our first picture represents femininity. Like she's not actually afraid of accepting her real side. I absolutely love women who are absolutely into this one thing, which is कि उनको पता है they are soft, they are feminine, they are caring, they are nurturing, they accept this thing. आजकल के टाइम पे the problem is that a lot of women are trying to be defensive when I talk about this one thing कि I want a woman who's feminine, so they'll argue with me in this one little argument. Oh, so you don't want me to work? Like I don't really want to have a woman in my life who's always, you know, fighting with me, who's denying her own nature, who's like, you know, always competing with men कि यार I want to be next to a man, I want to be next to a man. No, that will make, I don't want a chaotic life. I'm going to make it very simple. Okay, if you have a woman who's genuinely loving, nurturing, caring, you know, the simple womanly traits, man, who's not afraid of being feminine because of social reciprocations, and that's it. That's pretty much it. It's a very bare minimum green flag though. And the reason why I said bare minimum green, it's because हम लोगों के standards बहुत कम हो चुके हैं. ठीक है. I see proper cucks in relationships, ठीक है, who likes to get dominated, okay, from their wife, which is maybe is a type, maybe it's a type. I don't really have any problem in that. If you want to be dominated from your girlfriend, it's fine. It's your type, it's your life. Do whatever you want to. Like, I'm talking about men like me, okay, like normal men, okay. I'm not saying you're abnormal, but what the fuck do you mean you like getting slapped from your girl, bro? What? Actually, men like that exist, bro. Like, I'm not even kidding right now. They exist, okay. But normally talking about us all, I'm saying that if your woman is like genuinely accepting her feminine nature, she's like really feminine, soft, nurturing, caring, that's a bare minimum thing. That's a very cute thing. But it's a bare minimum thing though. Okay? But it's very cute as well. So yeah, I'm gonna be tiring this type of women on the bare minimum green. At least feminine to honi chahiye, your wife. Okay. So let's move on to the second image, which is not materialistic. I'm gonna be putting it in the green flag, top 1%, because you know, a lot of women who are from cities, a lot of women who are not actually rich, they tend to, you know, talk about this one thing. Yeah, I want a man who's getting paid this amount. I don't want a broke man. I want a rich man. And apparently women who actually belong to rich families, those type of women, they tend to seek morals more in a man. Okay. So the best thing a woman can do, and I'm going to actually put it in the top 1% because it's a very good trait, who's not materialistic, who's not too much heavy on your pocket. Like, you know, कि आपको उसके emotions को satisfy करने के लिए यार उसको Chanel का bag दिलाना पड़ेगा, आपको LV का bag दिलाना पड़ेगा. And I see a lot of people doing that. For example, a lot of my friends who are like 30-35-year-old who are like doing very good in business, you know, they don't have any game. They don't understand anything about female nature. All they have is money. Okay, so that's why a lot of women keep using them for money, and they feel like, oh, mere paas to auratein hain, bro. You know what? That's not it. She's using you for her money, and she's just probably giving you sex in return, like what, once a month, twice a month. That's all. Believe me, she's probably not gonna get married to you. She's probably gonna go and emotionally validate her with someone else because she's not in love with you. She's with you because you are rich. Okay, so it's a very
very good green flag if your woman is not very materialistic. The type of woman यार जिसके साथ ना आपका मन करता है कि यार मैं आइसक्रीम भी खा सकता हूँ रोड पे, इस तरह की औरतों से तो लगता है ना कि यार कल को मैं अमीर हुआ या फिर सक्सेसफुल भी हुआ ना तो इसको मैं अपनी पोर्स में ही बिठाना चाहूंगा. टाइप ऑफ वुमेन यार लाइक दैट. ठीक है. So yeah, women who are not very materialistic, I would definitely like put them into the top 1% of green flag. Very cute trait. Okay, so the next picture let me pick doesn't have male friends. Okay, so अब देखो मैं आपको ना यूं नहीं कह रहा कि यार बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए. I absolutely feel like कि sometimes platonic friendships exist between a man and a woman. It does exist, but it's very rare. Believe me on that. ठीक है. मैं यूं नहीं कह रहा कि platonic friendships exist नहीं करती, बहुत करती हैं. मैं यूं नहीं कह रहा because obviously बात है. It's fine. Like there would be a man and a woman happens. आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोलोगे ना. You don't really have to be that extremist. ठीक है. It's fine. हो सकता है. Maybe possible case. मान लिया मैंने आपकी बात. लेकिन if there is a woman who has like 7 male friends and she's always talking to those guys, I mean लड़कियों से बनती नहीं है यार. पता नहीं लड़कियों से नहीं बनती बाबे. I don't know. I can't talk to women. She's probably the public property of all those guys. Believe me on that. ठीक है. So I really don't want a woman who's surrounded with many men. No respectful woman would like to do that. Believe me on this. ठीक है. So मेरे हिसाब से if she is someone who really like focuses on her husband या फिर really like to be focusing on कि भाई मेरा पति है, I'm gonna be with him, I'm gonna love him, and most of her life is about कि वो यार मतलब अपने बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में और अपने पति और अपनी पति ग्रोथ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सोचती है, like most majority of the time. So it's a very green flag. Like it's like a fictional woman for me, someone who's like denying this idea of having a lot of male friends. But as you know, the moment someone talks about this, I'm a misogynist. I'm not someone who understands. But believe me bro, the only type of people who hate on me, I'm telling you my experience, मैं आपको ना experience से समझाता हूँ. The only type of people who talk shit about me in the comment section is either men who have zero dating experience, firstly, those type of men, and women. Okay, the only type of men that agree with me is that someone who's experienced, या तो experienced लौंडे होते हैं सारे, दो agree करते हैं मेरे साथ. For example, that reel blend thing, ठीक है, जो मैंने previous वीडियो में बताया था कि आप अपनी बंदी से एक बार रील को ब्लेंड करके देखना, आप देखोगे उसे एक्स की रील्स आ रही है. What is algorithm? Algorithm क्या होती है? Something you like to see. Okay, so if you are seeing those type of reels, like for example, आपकी बॉडी अगर आप कट कर रहे हो, अपनी बॉडी में कट कर रहे हो, and you're gathering information कि how to properly cut in your physique, like जिससे कि आप ripped हो सको, Instagram sort of suggest you that type of reels. Okay, similarly like that. ठीक है, मैंने वो चीज बोली थी, and a lot of men were commenting like कि आपने सही बताया blend की चीज. So yeah, experienced men who are experienced in dating, almost all of the times they agree with me. ठीक है, the only type of men who don't like me or who post comments like very hateful comments on like unexperienced men who have zero idea about the tier 1 dating scene and have no clue about hypergamy and anything, and not intellectually calibrated enough to understand the practical world and always commenting from an emotional perspective. Those are the type of men who hate me in the comment section. But nonetheless, like it's fine, more engagement for me, and I end up saving a man who's intellectual though. So that's one thing that matters for me a lot. Okay, so yeah, women who are not like fighting with you for this one bare minimum कि यार कि मेरे पास तो बाबू मेरे को तो 15 मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे पास तो आकाश, राजेश, मिकेश, विजय सारे टाइप के दोस्त हैं उसके. So no. So if a woman is like anti of having male friends, very green flag. It's fine. कोई इसका एक बचपन का दोस्त है, it's fine, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, you have met that man, it's perfectly fine, कोई दिक्कत नहीं. अगर वो टाइम इंसिस्ट कर रही है तो it's fine, एक समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर आपके 20 मेल फ्रेंड्स हैं तो weird, like I don't get it, like why, समझ रहे हो, skeptic. So it's a fictional woman, greenest flag. Okay, if she is not talking about male friends and she's focused on you, green flag. Best perfect case scenario मैं कह दूं कि she's just focused on you. ठीक है, थोड़ा सा मैं अपना माइंड ओपन करूं like these women want me to, it's fine, you can, अगर आपको कोई genuinely कोई है तो it's perfectly fine. ठीक है, but majority of the cases boys, majority of the cases नहीं होता ऐसा, believe me. So मैं आपको हर एक स्पेक्ट्रम समझाना में believe करता हूं. I'm not someone who's gonna put a false fucking fallacy on your mind. I'm not gonna do that. Okay, now let's talk about someone, कुछ इमेज मेरे को अच्छी सी दिखने दो. या अनरियल डिवाइन देवी, वाइफ हर एसएप टाइप थिंग. अब मैं बात करने वाला हूं हाइपरगमी के बारे में. अ वुमन हु इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हर हाइपरगमी. मैं कह रहा हूं शादी कर लो भाई, उससे शादी ही
कर रहे हो उस औरत से, ठीक है. A woman who's not getting tempted, a woman who's not willing to leave you for someone better, a woman who genuinely believes in you that you can do something with your life, a woman who's always there for you from bottom of your life to the top. आपने अभी भी लेटेंट का शो देखा था, उसमें एक औरत आ रखी थी जो उसके साथ भाग गई थी विद हिम, यू नो, उसके छोटे से बिजनेस को हेल्प कर रही थी, अपना फोन गिरवी रख रखा था. दैट टाइप ऑफ वुमन यार, अनरियल, समझ रहे हो आप, अनरियल डिवाइन देवी, लाइक वाइफ और एसएप टाइप शिट, समझ रहे हो, हु इज नॉट हाइपरगमस. वहां पे करण औजला बैठा था लेकिन उसको प्यार अपने पति से ही था, समझ रहे हो. एंड देयर वाज दिस सेकंड गर्ल वाज लाइक, औजला मेरे को आपसे गाना सुनना है यार, आई लव यू, यू नो. सो समझ रहे हो आप. ओके दैट वाज अ जोक, आई वाज नॉट सीरियस अबाउट दैट, बट आई होप तुम मेरा क्रक समझ रहे हो उस चीज में, समझ रहे हो कि यार समवन हु सपोर्ट्स योर मिशन, हु इज देयर फॉर यू, ठीक है, हु इज नॉट गोना बी लीविंग यू जस्ट बिकॉज यू गॉट ब्रोक, या आपकी लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, यू लॉस्ट योर मनी और समथिंग लाइक दैट, हु इज नॉट इन, हुज हाइपरगमी इज नॉट इन हर चार्ज ऑफ हर ब्रेन. दैट्स माय पॉइंट, जो कि मेरे हिसाब से अनरियल डिवाइन देवी लाइक टाइप शिट कि उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए भाई. आई थिंक दैट्स द बेस्ट फकिंग ट्रेट अ वुमन कैन हैव, ठीक है, बेस्ट फकिंग ट्रेट अ वुमन कैन हैव. ओके, सो these are the type. It's very rare though. It's very rare though in this generation. It's all cooked up. ठीक है, like we are all. You can see that on my Instagram, man. We are all fucking cooked up. A woman has a following list of what 1,000, like 2,000, 3,000. We all want options. किसी को यूं नहीं है कि they want to stick to one. Rarest of the rare times. Okay, ऐसा होता है, ठीक है. तो यही चीज है. Like it's very rare in this generation though. That's why I put it on the very first tag. Unreal divine devi, wife or ASAP. अगर आपको मिल जाती है, शादी कर लो बिना सोचे. सिंघानिया has approved चेकलिस्ट, शादी शादी सीधा ब्याह, सीधा सीधा. मेरे को इनवाइट करना है इस औरत मिले तो मैच नाम तुम्हारे ब्याह में मैच ₹1,00,000 की वो करके आऊंगा, दान दे के आऊंगा मैच. चिल करो यार, गुड फॉर यू. ठीक है. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस. नाउ लेट मी पिक अनदर वुमन. ओके, सो देन देयर इज दिस समवन हु इज नॉट हेवीली पियर्स्ड और टैटूड. आई एम गोना पुट दिस इन द लाइट ग्रीन टॉप 15%. ठीक है. ओके, हैविंग वन टैटू इट्स फाइन. एक चलो कोई बात नहीं, आप यू हैड सम, यू वांटेड टू डू समथिंग, थोड़े बहुत समझ में आते हैं. बेली पियर्सिंग क्यूट लगती है, नोज पियर्सिंग क्यूट लगती है, ठीक है, एक आधा समझ में आता है. लेकिन इफ हर बॉडी इज फिल्ड विद टैटूज, उसके 18 टैटूज हैं, 25 टैटूज हैं, एंड शी गॉट हर टिटीज पियर्स्ड, बेली, यू नो व्हाट, इट शो इट्स अ वे ऑफ अपीलिंग सेक्सुअली. कॉमन सेंस लगाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज यूज करो, ठीक है. टैटूज एंड पियर्सिंग दैट इंक्रीजेस योर सेक्सुअल अपील, एंड इफ समवन इज गेटिंग देम, मोस्ट लाइकली, मोस्ट ऑफ द चांसेस इज दैट दे वांना एंगेज इनटू दैट. बिलीव मी ऑन दिस. अब before someone comments into this, पर भैया I know a gothic girl who loves me, it's fine. अगर आपके पास एक gothic लड़की या फिर ऐसी लड़की जो बहुत tattoos हैं, piercings हैं और आपको प्यार करती है, good for you bro, don't come at me and attack me, ठीक है, अच्छी बात है, good for you. मैं यहाँ पे generalize नहीं करता चीज, मैं यहाँ पे majority of the times क्या होता है वो discuss करता हूँ, ठीक है. I don't know why people come like that as if कि मैं 100% बता रहा हूँ. No bro, it's fine, okay, it's perfectly fine. I'm not saying कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं majority discuss karunga bro, like please let me be, you feel me. Okay, so if someone who's like heavily tattooed or pierced, believe me, they are more into their sexual aspect of her life. I've personally met women like that. Crazy kinks these women have, babbe, crazy kinks, you know. What type of kinks मैं बता भी नहीं सकता on this YouTube channel right now because I would probably get banned for that, you know. Weird type of kinks like that would actually scare you if you're a sober normal man type things, ठीक है. And when you ask for the body count, can't even imagine on that, ठीक है. So I don't really like to, you know, see my woman who has 90 tattoos and 30 piercings, ठीक है. So that's a red flag for me. So women who don't have this, bingo, like perfectly fine, ठीक है. Someone who's like, you know, not having a lot of tattoos, एक समझ में आता है, 2-3 cute piercings, ये भी समझ में आती है, so it's perfectly fine, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. लेकिन someone who's like heavily tattooed, that is just I don't know, sign of her own misery on her body type shit. समझ जाओ इस चीज को, okay. And now a lot of women be writing paragraphs, no, I do it for myself, and they're all lying. I don't know why, but anyways, I'm trying to form societies and people are commenting shit about it, like how negative it is, how bad it is. Like मैं तो चाहता ही हूँ ना शादी हो अच्छे लोगों की दो, ठीक है. Come on man, I'm fixing society, why are you being mean to me? ठीक है. So let's move on to another thing, okay. Female friends, yeah, someone who's not enslaved of her green flag, okay. Now I'll be very honest with you. A woman who belongs to a good family, जो एक अच्छी family से belong करती है, ठीक है, she would go to a college and she would meet her typical hoe friends who are all about drinking, going out, partying, and she would ruin her
yourself, ठीक है. अगर आपको ऐसा लगता है ना, dear ladies, that I am the bad man, your friends are probably worse than you, believe me, because आप एक बार सोच के देखना 12th class में how you lived your life. The second you entered in college, you got into drinking, you got into casuals, you got into so many things. In fact, my own girlfriend, my first relationship, 12th class tak, she was with her dad, one body count, just me, purely in love. The second she steps out in a university, every single thing starts becoming new. वो novelty feel होती है, वो नई दोस्त बनती है. And the reason why I got into a breakup is because of one of her friend who was like, you know what, let's go to that home's party. And I was also a kid back then. मेरे को इतना कुछ पता नहीं था, मैं बस सिर्फ करने के लिए प्यार ही था उस टाइम पे, nothing else. Okay, so she started going to some friends. I am this friend, मैं वहाँ जा रखी हूँ, blah blah, and she cheated on me with someone else. ठीक है, so that's how it usually goes. So I absolutely would love women who are like, who don't have many female friends who are hoes. ठीक है, and believe me, you would have and if there is a woman who's listening to me right now, believe me, your women friends, your female friends, you think they like you, okay, but believe me, crux में आपको बताऊं ना, आपको ना दिल से सबसे ज्यादा प्यार, जो मैं कहता हूं ना प्यार, आपका एक आपको आदमी कर सकता है या आपको आपके घर वाले कर सकते हैं. Your female friends are always in a competition with you. They will always be competitive to you. ठीक है, for example, if you want to know if they are competing with you or not, I'll tell you one example. You know what? Do one thing. Invite a very well-spoken, good-looking Chad. Make them sit in front of 4 women who perceive themselves as really close friends. ठीक है? And you know, let that man have a good game. उसमें good game है. He's like a very good vibe. अच्छा आदमी, कोई डम बातें नहीं कर रहा. He knows how to, you know, ये समझता है वो क्या करना है, क्या बोलना है, क्या है, type thing. ठीक है? I can guarantee you one thing. All of these 4 women who claim themselves to be like good friends of each other would be started getting defensive. अच्छा ये करा था आपने? Oh, but I thought तूने वो बोला था यार उस दिन. अच्छा तेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था ऐसा? बट तूने तो मेरे को उस दिन ये बताया था. देखो अब इस चीज में ना जो लोग एक्सपीरियंस्ड है ना इस चीज के अंदर, वो लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ. Because something I have experienced as well. मैं अब सारी तो नहीं बताऊंगा आपको, but it's like either you get it or you don't type thing है ये. आपको या तो समझ में आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा. That's all. ठीक है. So I would say it's a very greenest flag if a woman don't have many female friends who are always trying to take her out on parties and blah blah, because these women, they are the first ones who ruin relationships, good relationships. ठीक है. I think your boyfriend is being a dick. Oh, why is he controlling you? No, you can have your own life. It's perfectly fine. Okay, so that's how they ruin relationships. He's just maybe trying to be caring about her कि बाबू रात को ऐसे नहीं जाना मेरे बिना बाहर, मैं ट्रस्ट नहीं करता किसी पे. So a man can be just like that कि babe please just like ध्यान रख अपना, I'm just being, उसकी वो concern को इतना टॉक्सिकली दिखा देंगे उस बंदी के आगे that she would start hating her boyfriend for that. ठीक है. तो ये चीज होती है about females यार. Like that's why I'm not a big fan of female friendships, believe me, because they ruin women more. If you think I'm talking shit about you, believe me, your female friends are probably talking shit about you more than me right now behind your back. अगर आपको ऐसा लगता है ना मैं am the problem, believe me, your female friends are the bigger problem, and they are so perfectly on surface level good with each other. ऐसे दिखाएंगे कि सखियां इतनी प्यारी हैं एक दूसरे की, दोस्त पूरी उम्र के लिए साथ हैं, but that you know how it usually goes. Okay, so yeah, green flag if women don't have like a lot of female friends, very good green flag. I get it, एक दो दोस्त हैं, it's perfectly fine. मेरे को यार उस चीजों में कोई दिक्कत नहीं. आप एक अच्छी बात है, दोस्त होने चाहिए. मैं नहीं कह रहा दोस्त मत बना, होने चाहिए, लेकिन ढंग के होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपके मतलब मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स में आपको लेके जाएं, आपको हुकअप कल्चर में लेके जाएं, आपको नशे करना सिखाएं, आपको ये ड्रग्सम में घुसाएं, आपको चीटिंग के बारे में बताएं, आपको गिमिक्स बताएं कि हाउ टू टैकल योर बॉयफ्रेंड टाइप शिट. ये सब नहीं करना. So yeah, that's also very greenest flag for me if a woman don't have many female friends. Okay, I hope it was clear for all of you. Okay, now let me put this on the Unreal Divine Devi, like wife her ass up, someone who is not there for your money. Believe me on this. ठीक है, यहाँ पे मैंने बात करी थी मटीरियलिस्टिक लड़कियों की, कि जो लड़कियों को नई नई चीज चाहिए कि मेरे बंदे पास ये गाड़ी है, तेरे बंदे पास. यहाँ पे मैंने बात करी थी मटीरियलिज्म की. यहाँ पे मैंने देवी की बात कर रहा हूँ. someone who's not loving you for money. That's something मैं कहूँगा कि सबसे मतलब अनरियल डिवाइन औरत. ठीक है, जो कि आपके साथ थिन और थिक दोनों में रह लेगी. ठीक है, जो आपके साथ हार्ड टाइम में रह लेगी, जो आपके साथ आपके डाउनफॉल में रह लेगी, जो आपके साथ ना आपके साथ मतलब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है और या फिर पैसों के लिए है ही नहीं टाइप शिट. समझ रहे हो आप? तो ये टाइप की औरत यार बहुत अनरियल डिवाइन भी. वाइफ और एसअप इफ शी हैज दीज टू ट्रेट्स ब्रो, अगर आपकी औरत में दोनों गुण है ना, मेरे को बताना. इफ समवन हैज अ वुमन लाइक दैट, I will actually give you a heart. I'll react a heart and I'll like go for it bro. ये बहुत
अच्छी बात है, बहुत अच्छे ट्रेट्स। अगर यू आर श्योर अबाउट दीज टू ट्रेट्स, एंड अगेन श्योर अबाउट दीज टू ट्रेट्स, ठीक है, तो अच्छी बात है ब्रो। आई थिंक यू कैन हैव अ प्रीटी मोनोगमस रिलेशनशिप एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ विद दिस वुमन, ठीक है। यू डोंट हैव टू फॉल फॉर द मीडियोक्रिटी ऑफ स्लीपिंग विद अदर वुमेन, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। वो चीज मैं खुद करके आ रखा हूँ, कोई फायदा नहीं होता उस चीज में, समझ रहे हो। स्लीपिंग अराउंड मल्टीपली, इट जस्ट मेक्स यू शैलो, जस्ट मेक्स यू hollow from inside, ठीक है, because there is no end to that, समझ रहे हो। there is always a prettier vagina, there is always a pretty woman out there who you can sleep with, but that's not the goal, right? It's not a meaningful thing, it's gonna rob you। एक बहुत emotional bonding capabilities खत्म हो जाती है आपकी, okay, and you start seeing every single woman with the same pattern, और फिर आप उन्हीं टाइप की औरतों से और मिलते जाते हो, तो एक बहुत mental barrier बन जाता है आपके लिए to again love someone, ठीक है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती, and I'm pretty sure people who have high body counts can relate to that। it gets hard to love, समझ रहे हो आप। तो मैं नहीं चाहता वो चीज आपके साथ हो। It's a very beautiful feeling, so if you have these two things, if your woman has these two things, go for it, it's perfectly fine, ठीक है। Now, okay, someone who's not an alcohol addict, now I would put this in the bare minimum, okay। So I'll be very honest with you, I really don't want a woman or a wife in my life who's like a drug addict, to be very honest, because I'll be very honest with you यार, like जो कॉलेज सीन होता था, जो हम यूनिवर्सिटीज में होते थे, all of these हाउस पार्टीज, क्या कल्चर होता था हमारा हाउस पार्टी कल्चर, तुम लोगों में किसी ने अगर विटनेस करी हो, हम सारे शराब पीते थे, कैजुअल सेक्स, हुकअप, सुबह उठ के सारे चले गए, that's it, ये सब चीजें होती थी, ठीक है। So and obviously I think alcohol is also a gateway of quicker sex, believe me on this, ठीक है, when I'm saying that। तो औरतें जो बहुत शराब पीना पसंद करती हैं, they tend to have a higher body count, ठीक है, according to me, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, I'm not saying it's the rule, but mostly what I have seen, someone who likes to drink daily or like very fascinated about drinking, यार शराब पीते हैं, and so let's fucking go for that, they are someone who would like, they're like into hookup culture, like likeliness of that woman being into a hookup culture is very much more, ठीक है। तो I'm just saying, मैं यूं नहीं कह रहा कि सारी ही ऐसी होंगी जो शराब पीती हैं, ठीक है, बट पर्सनली मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी में ऐसे गुण हो कि वो यार वो दारू पीती है, वो कोक एडिक्ट है, समझ रहे हो, वो अल्कोहल एडिक्ट है, she's addicted to drugs, so I don't really want that। So yeah, that's like bare minimum green, like I don't want a woman who's, you know, into drugism and all of that। I really want a woman who's like occasionally पी लो, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ पी लो आप। There are like families जो कि like घर पे भी ओपन होते हैं, they're like drinking, it's perfectly fine, it's कोई बात नहीं, ठीक है। Generations are changing, it's perfectly fine, I get it, it's perfectly fine, ठीक है। नॉर्मली पीने में कोई दिक्कत नहीं है, ओकेजनली पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहाँ पी रहे हो, किन के साथ पी रहे हो, कितनी पी रहे हो, समझ रहे हो। और कुछ चीजें बहुत मैटर करती है लॉन्ग टर्म में, विच एक्चुअली हेल्प्स यू नो फाइंडिंग आउट कि किस तरह की औरत ठीक है या गलत है, एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई होप यू गेट दैट। सो अ वुमन हु इज लाइक एक्टिवली ड्रिंकिंग एंड इनटू क्लबिंग एंड all of that and into house parties, you know why she's there, to get her coochies or whatever, ठीक है। So yeah, first of all this, now let's talk about Unreal Divine baby again, women who are religious। I absolutely love women who actually are into religion, but the chances are like most of these women fake it, like they're very good larpers when it comes to being religious। It's exactly like women who show interest in bikes and cars for the sake of it because men like that, ठीक है। They don't actually have zero idea, they don't even know what V6 and V8 is, they don't care about it, they would just say, oh I really like cars, समझ रहे हो आप, just because men like, they're larpers, okay, they're attracting you towards them, it's not like they like them। Similarly, it's like women who are like, you know, they try to be fake religious, okay, she would have a bio of something related to Krishna and she's like talking to 18 men at the same time in the DMs in the same ID, समझ रहे हो आप। So थोड़ा सा देख के करना, because older women generally they tend to be religious, for example 30, 28, 32 years old, those type of women, I can understand them being religious, believe me, I can understand them being religious, but for me to understand कि 18-19 साल की औरत religious बन के दिखा रही है, अगर वो सही में है ना, तो भाई unreal divine wife for ASAP type shit, unreal divine wife for ASAP। लेकिन most of these women, they are larping that, believe me, to, you know, get that male attention। most of these women, or astrology as well, समझ रहे हो, तो astrological women, and I've met a woman who play tarot cards as well, weird ass larpers bro, I don't know why they all do that। Oh, I can read your this, oh baby, you know what, we will play some cards, it will tell you your fate, I'm actually a very queen, what's your body count, I don't remember, it's probably too high, what the fuck, ठीक है। they're all fucking larpers, so please save yourself from those women। but if someone is like actively religious, जो सही में like पूजा पाठ इन सब चीजों में है, was close to God, वो अपनी body की respect करेगी यार, believe me on that, ठीक है। she would respect her body, she would respect every single thing, okay। so yeah, but larper से बचना है इस चीज में, like they're very fake spiritual as well, very when I'm saying very, a vast
vast majority of fake women who are spiritual as well. So that's what I mean. Okay. अब बात करते हैं someone who's like afraid and close to dad. That's something I would say is like greenest flag. It's a very green flag. ठीक है. Someone who जो अपने पापा से प्यार करती हैं, who's like listening to him, जो उनसे थोड़ा डरती भी है, because it's really थोड़ा सा important यार. Like अगर एक लड़की के अंदर यूं नहीं है ना कि मेरे को अपने पापा को डिसअपॉइंट नहीं करना, and when I'm saying डरती है इन अ पॉजिटिव वे कि मेरे को ना डिसअपॉइंट नहीं करना अपने पापा को, तो वो डम डिसीजंस नहीं लेगी इतने लाइफ में. ठीक है. वो थोड़ा सी स्टैंडर्ड्स रखेगी यार. माय डैड गिव मी, बट लाइक आई सेड, लाइक कुछ कम्युनिटीज होती जिसमें ना लाइक लड़कियां औरतें थोड़ा सा डर रखती है अपने बाप का कि यार मैं अपने बाप की मतलब नाक नहीं कटवा सकती एंड टाइप थिंग, एंड क्लोज टू द फादर एंड शी लव्स हिम. ठीक है. तो दीस टाइप ऑफ वुमेन दे वुड नॉट बी अ मेस टू यू ब्रो, बिलीव मी. दे हैव लाइक रियली स्ट्रिक्ट फैमिली रूल्स. अच्छी चीज होती है ये यार. अच्छी लड़कियां. देखो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे मैं सिर्फ उन औरतों की बात करूंगा जो शादी करने लायक है. समझ रहे हो आप? So that's one thing यार. That's a very good trait according to me. It's a very good thing. Let me see how long this video is right now. काफी लंबी हो गई यार ये. 28 minutes. Crazy बाबे. Okay. So it's a very good thing. ठीक है. अच्छी चीज होती है if that girl is like not into जो अब मेरे को ना लड़कियां जो दिक्कत पता है क्या होती है, some like fathers who give too much freedom. समझ रहे हो? बहुत ज्यादा आजादी दे रखी है. समझ रहे हो? तो अब उस चीज में दिक्कत क्या है ना, women भाई बहुत सटल दिमाग होता है एक बच्चे का. मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रहा, मैं लड़के की बात भी कर रहा हूँ, लड़की की बात भी कर रहा हूँ. भटकना बहुत आसान होता है जब घर वालों से गाइडेंस नहीं मिलती अच्छे से. तो ठीक है, वही बात है. समझ रहे हो? तो इफ सम वुमन इज लाइक शी इज वेरी क्लोज टू हर डैड, शी वुड रिस्पेक्ट दैट मैन, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार. ठीक है. अगर वो अपने पापा की इज्जत करती है तो मोस्ट लाइकली वो तुम्हारी भी करेगी. ठीक है. अगर तुम एक अच्छे आदमी हो तो, बिकॉज वो अपने पापा की इज्जत इसलिए करती है, उसका पापा अच्छा आदमी है. यू फील मी? बिकॉज ही लव्ड हर. ओके. लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं लाइक हु इज लाइक माय डैड इज शिट, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू दैट, दे लाई टू देयर डैड एंड ऑल ऑफ दैट. उनको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी. उनके बाप से ज्यादा प्यार पहली बात तो कोई आदमी कर ही नहीं सकता. ठीक है. पहली चीज. दूसरी चीज, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, द मैन दे आर अब्यूजिंग एंड फाइटिंग फॉर इज प्रोबब्ली द ओनली मैन हूज गोना टेक केयर ऑफ हर. समझ रहे हो? पर ये चीज नहीं समझ आती बिकॉज चाइल्डिश माइंड थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है, नोवेल्टी एंड ऑल ऑफ दैट. यूनिवर्सिटी में घुस के आई गेट इट परफेक्टली फाइन. ठीक है. तो लेट्स मूव टू द अदर 3 points, okay, which is like the Instagram one. Okay, now I think it's a very green flag according to me, very green flag if she's like not so active on social media. When I'm saying मैं यूँ नहीं कह रहा कि social media account मत बनाओ, I'm not saying that. I'm just saying कि यार you don't have a male hostile following. What the fuck? समझ रहे हो आप? It's a green flag. Like if she don't have like crazy amount of men in her following, if she has like crazy amount of men in her following, just know one thing, that she loves attention and she's probably hypergamous. That's the best indicator of finding a woman. ठीक है. And yeah, अगर वो बहुत सारे आदमियों को फॉलो करती है and she's like she basically has a male hostile in her following कि आपको यूँ लगे बहन चो इतने थोड़ी आदमी होते हैं. There are all type of chads there, there are all type of mids, there are all type of fucking influencers there who's following her back. Save yourself babbe. She is someone who's always going to chase her hypergamy. Always. ठीक है. So it's a very good green flag for me जिसके ना lower side पे थोड़ा सा मैं यूँ नहीं कह रहा कि Instagram मत चलाओ भाई. ठीक है. I'm not an extremist. I'm always a realist. It's perfectly fine. आपको सोशल मीडिया यूज करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन दिक्कत वहां पे आती है when she is like उसकी फॉलोइंग में भरे पड़े हैं आदमी. It should be like ठीक है, people you know in real life, basically them. ठीक है. Maybe your school friends बचपन से साथ हो जिनके that works, it's perfectly fine. ठीक है. It could be your brothers, your cousins, your family members and your husband. That's all. It's perfectly fine. लेकिन अगर आप 800 दिल्ली के लड़कों को फॉलो कर रहे हो जिनसे आप कभी मिले ही नहीं, just chatted with them, there is a problem. Your attention fucking SO3. Excuse me. Will feel me. Okay. So that's it. Like it's a very good green flag for me if she is like not having a male hostile following in her Instagram. Like please, please. Okay. So okay. Then the next one I would say is someone who checks up on you. Bare minimum, I would say bare minimum. Okay. I really don't like women who are like manipulative and when they're trying to talk to you, up to manipulate करने को, they're trying to play mind games, gimmicks with you. I don't really f with those type of women because obviously, but the last thing you would want to have as a wife is trying to play mind games. after mind game खेल रही है, ठीक है, आपको manipulate करने की कोशिश कर रही है. No, a woman who's there for me. समझ रहे हो? Hi, how are you? That's what this picture means. Hi, how are you? Is everything okay? सब ठीक चल रहा है? How's work? Who's checking up on? Who has consistency with you in the relationship? हर रोज. ठीक है. So that's a bare minimum though. Obviously बात है, she's my wife. If she's not being consistent with me, not saying my mom up to this date calls her dad. समझ रहे हो? मतलब calls husband from why I'm saying dad. Like अपने पति को up to this date because I'm living with her like in Rajasthan right now. ठीक है. I'm just with my mom right now. Up to this date, she still checks up on him. So it's a very cute thing, right?
right, you know. And the most perfect dynamic, if you don't have any clue about anything, look at your mom and dad, bro. Look at the way they are living. Some of the they're together from years and years. They'll tell you more about love than these women on internet proclaiming that I'm a misogynist. Some of the they will tell you more about love. Okay. And if you feel like मैंने गलत वीडियो बना रखी है ये, ठीक है, just go and show this to a woman who's like, you know, a bit traditional. And I can guarantee one thing, majority of times she would agree to what I said, because जिसको उसको परिवार बनाना हो ना, वो इन सारी बातों से पक्का agree करेगा. जिसको कलेश करना होगा, मुद्दे करने होंगे यार, और वो करना होगा, वो तो करेगा ही. So you can't do anything about that. ठीक है. So someone was very consistent with you, ठीक है, जो आपको चेकअप करता है आपके lows और downs में, all of that. Keep that woman, bro. ठीक है. It's a bare minimum though, but it's a very good thing. It's a cute thing. Now, someone who's not showing herself on Instagram stories. This as well. ठीक है. Someone who's not posting her thirst traps and all of that for attention, and she's not posting all at bare minimum green, according to me. Bare minimum green. ठीक है. So yeah, that's it. So yeah, guys, that's pretty much it for this video. I hope मैं बहुत डेप्थ में गया था फीमेल नेचर के यहाँ पे, and I've saved you, bro. अगर आपने वीडियो पूरी देखी ना, I've saved you from like shit ton of you know, things in your life that you could have met. Believe me, I've saved your mental health from a lot of encounters. आपको समझना पड़ता, मैंने एक्सपीरियंस करके वीडियो बना के डाल दी. ठीक है. I've saved a lot of your dating time. So next time if you're trying to marry someone, look for these 3 traits. If you find that, marry that woman ASAP. Okay. So that's it, boys. I'm gonna see you in the next video. If you want me to make a video on proper red flags, do let me know. I'm gonna make that. ठीक है. तब तक के लिए take care, peace, bye bye, big pucci.